अच्छा ये स्टार्ट करें किसी क्वेश्चंस है ना वो मेरे से पूछ ले वो अगर प्रॉब्लम्स वगैरह किसी पेपर में ठीक है. So starting with the first one, calculator. I would need a calculator. Somebody should have a calculator with them. I said W1723. We've got this question. Explain the term. What is meant by the term bond energy? Okay, that's the question. So bond energy is the energy that is. Okay, that's the energy that is needed to break bonds, and it's very specific to break 1 mole of bonds. ठीक है, of the same type. और एक आखिरी चीज है कि of the same type in gaseous molecules. ठीक है, that's the first definition. फिर वो कह रहा है कि use the data to calculate the value of the NH bond energy. You're given the bond energies over here. ठीक है, so you're gonna use those values, and you're gonna try and calculate those using that. You're gonna एक बस मैं देख लूं कि पेपर के हमने किया हुआ तो नहीं है. Value of Kp. So let's keep doing this one. NH की bond energy. So how do you figure out bond energy? The formula for that is its enthalpy change is equal to the bonds that are broken minus the bonds that are formed. वो सारा exothermic. Bond formation is exothermic. So the bonds that are being broken are in this case it's going to be N triple bond N. So that's 944. That's going to be plus 944. And there are 3 HH bonds that need to be broken, so that's 436, but that's going to be 3 into 436. और फिर फॉर्म कितने हुए? फॉर्म हुए हैं NH के 6 bonds. NH3 has 3 NH bonds and 2 molecules, so that's 6 NH bonds. I'm going to call that X. ठीक है, so I'll just refer to it as X, and the answer, the enthalpy change is already given, so that's minus 92. वो आपको पता है, तो ये X की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे क्या आ रही है. किसी ने कर लिया? जवेरिया, एनीवन? अस्सलाम सर. वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? 319.6. 390? Yes, 0.6. अच्छा, 390.6. ठीक है, फिर ये वाला दिस वन इज ये वैसे कंफर्म कर लो कि 390 है, 390.6 है. और remember it's everything is three significant triggers में 391 हो गए. इसका मैं ओपन कर लेता हूँ. मैं इस चीज का ख्याल रखना है, चाहिए इस एंड में देख लेते हैं. ठीक है. अच्छा, now the Haber process is usually carried out at a temperature of 400 in the presence of a catalyst. Changing the temperature affects both the rate of the production of ammonia and the yield of ammonia. Boltzmann distribution, DV of 400 degrees centigrade, that's the Boltzmann distribution. Using the same axis, sketch a curve to indicate a higher temperature की curve. So higher temperature पे क्या होता है? High energy के ऊपर the number of particles they increase, and at low energy the number of particles they decrease. The curve shifts to the right, and it also becomes flatter as well. ठीक है? So that is what happens. So that is what the curve would look like. Or with reference to the Boltzmann distribution, state and explain the effect of increasing temperature on the rate of production of ammonia. So how would you use Boltzmann distribution to show that? Okay, this is your actuation energy. So इससे पहले क्या था कि the particles that were having energy greater than actuation energy, that it were these particles. ठीक है? But now, if you increase temperature, what happens is you have got more particles that have energy greater than actuation energy. Because higher energy side पे number of particles ज़्यादा हो गए हैं, so you'll have more of them.
So these particles would take part, these ones, they would take part in successful collisions, effective collisions. So let's take a reference to Boltzmann distribution. So what you're going to state is that the number of particles that have energy, or the proportion of particles that have energy greater than activation energy, they increase. तो उससे फर्क क्या पड़ेगा? What the difference that it would make is that now you will have more frequent and successful collisions. Yeah, effective and successful. And sir, the activation energy, would it be the same or increased? नहीं सेम होगी, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी तो चेंज होती है। दो तरीकों से वो क्वेश्चन पूछता है ना, इसके ऊपर दो ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एक तो वो कहता है कि यू इंक्रीज टेम्परेचर, तो इफ यू इंक्रीज टेम्परेचर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, if you increase temperature the activation energy remains constant. The other question is that he doesn't increase temperature. What he does is he adds a catalyst. So when you add a catalyst, the activation energy decreases. So if it decreases, तो उस केस में भी क्या होता है कि the number of particles having अभी नई activation energy है, ठीक है, it's a lot easier for the reaction to happen because the activation energy is lesser now. So उस केस में भी the number of particles having energy greater than activation energy increases, but in that case it increases because the activation energy is lesser, लेकिन वो catalyst के साथ होता है, ठीक है, clear है? Excuse me, sir. Yes, sir. हाँ जी सर मार्किंग स्कीम में लिखा होता है इसके तीन नंबरों का ना सर, तो पहला पॉइंट लिखा होता है कि हाँ सर विद रेफरेंस टू कोलिजन थ्योरी, सर वो क्या होता है सर, इसका मतलब? ये कोलिजन इफेक्टिव और फ्रीक्वेंट कोलिजंस ना, इसका बल्कि साथ में वो खोल भी लूं एक सेकेंड, क्योंकि 3 मार्क है तो उसके एग्जैक्ट हम देख लेते हैं कि एग्जैक्ट 3 पॉइंट्स क्या है। अच्छा ये वाला, अच्छा तो शेप था कि एक तो at higher temperature above EA is more molecules with V, तो पहला पॉइंट हो गया, और दूसरा फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सेसफुल collision और रेट इंक्रीजेस। ये हमने ये एक पॉइंट उससे दिया हुआ, ये हमने नहीं लिखा हुआ, हमने लिखा था कि नहीं लिखा था, ये ऑब्वियस पॉइंट है वैसे। सर एक बात पूछनी सर, इसमें जो लिखा हुआ है नहीं विद रेफरेंस मार्किंग स्कीम में, अच्छा सर उसने लिखा है कि नहीं एक उसने पहला पॉइंट लिखा है, ओके हमने जो पॉइंट मिस किया ना, एक वो था कि वो रेट तो हमने बताया नहीं कि रेट बढ़ा है कि नहीं बढ़ा वो एंड में, सो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, ये हमने मिस किया हुआ। यस सर। सर एक और बात सर आखिरी, अच्छा एक सेकंड में खोल लो सर उसने, अच्छा हाँ ये हाँ देखें सर, सर इसमें जो पहला पॉइंट है ना सर, इसमें लिखा है रेट इंक्रीजेस एंड एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ कोलिजंस, सो वी हैव टू उसका रेफरेंस देना एक मार्क के लिए, और आखिरी जो पॉइंट है सर उसमें लिखा हुआ है हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सेसफुल कोलिजंस। हाँ इसका तो जो हाउ मतलब आर दीस टू पॉइंट्स डिफरेंट सर? नहीं इसका मतलब ये कि ये पॉइंट सिर्फ तब मिलेगा, एंड का मतलब है कि ये पॉइंट जो है ना ये सिर्फ तब मिलेगा अगर ये वाला पॉइंट आपने लिखा हुआ है। सही है सही है कि मतलब वो अगर आपने लिख दिया रेट इंक्रीजेस और फिर आपने बताया ही नहीं है कि भाई वो क्यों इंक्रीज हो रहा है, तो फिर मतलब वो तो वैसे ही तुक्के पे आंसर ठीक हो जाएगा ना कि रेट इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो मतलब ऑब्वियसली वो कोई वैसे ही तुक्का लगा रहा है तो कोलिजन का रेफरेंस देना है। हाँ तो उसमें एंड ये वाला जो पॉइंट है ना कोलिजंस वाला, फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सेसफुल कोलिजंस, वो देना है, फिर जाके वो मार्क मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या इस क्वेश्चन हमने लूज किया एक मार्क क्योंकि हमने वो लिखा ही नहीं है रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ना देख लेना, इस पे नजर रखना कि बहुत बेसिक पॉइंट्स होते हैं जो कभी कभार मिस हो जाते हैं। अच्छा नेक्स्ट वन वो कह रहे अब नाउ द नेक्स्ट वन इज अबाउट yield of ammonia, ठीक है। तो यहाँ पे ली शैटलर प्रिंसिपल आ जाता है। सो व्हाट हैपेंस इफ यू इंक्रीज टेम्परेचर टू दिस रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन फेवर होगा? एंडोथर्मिक, ठीक है, जो कि इस केस में इट्स गोइंग टू बी द बैकवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड इज एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो बस उसके अंदर ये बताना है कि इसके भी 3 मार्क है वैसे, तो इसका अगर लिखोगे ना आंसर इट्स गोइंग टू बी कि फर्स्ट थिंग एंडोथर्मिक इज फेवर्ड,
फिर मेरे ख्याल से वो बताना होगा कि you have to tell कि which one is endothermic. Hence backward reaction is faster compared to the forward reaction, or hence backward rate is faster. Yeah, equilibrium position shifts to the left. As compared to forward, hence yield decreases. वो तीसरा mark तो वही होगा, yield decreases. ठीक है, इस जगह लिखा होगा वो equilibrium position का लिखा होगा, equilibrium position shifts to the left. तो लेकिन again it's 3 marks, तो इसका क्या है कि yield equilibrium to the left, ठीक है, reverse direction वो उसके बारे में, and और ये मार्क लिखा ही नहीं कि वो to oppose the change or oppose, वो ली-शाटलर प्रिंसिपल एक्सप्लेन करना था नहीं, क्या ये हमने लिखा कि नहीं लिखा, increase the temperature to absorb the or decrease the temperature. ली-शाटलर प्रिंसिपल उसने कहा था मेंशन करो, वो चीज एक मिस हुई है कि खाली एंडोथर्मिक फेवर्ड एक सेकंड, एंडोथर्मिक because endothermic favored is kind of the same thing, to absorb the heat or decrease the, probably उसमें cover होना चाहिए, तो endothermic favored को ज़्यादा explain होना चाहिए था, 3 marks है, इसको explain ली-शाटलर principle लिखना चाहिए था कि what is the ली-शाटलर principle, the equilibrium opposes, if you increase temperature the equilibrium would try to decrease temperature. Then equilibrium tries to decrease temperature by favoring the endothermic reaction. तो उसके अंदर फिर होगा by favoring the endothermic reaction. ठीक है, ये क्लियर है? बस Yes, sir. ठीक है, बस ये कि 3 marks होंगे ना, तो 3 marks के अंदर आपको फिर थोड़ा सा ना वो हर चीज का फिर ख्याल रखना पड़ेगा, बहुत बेसिक बातें भी बीच में लिखनी पड़ेंगी, ठीक है, वरना तुम खाली लिख देते हैं कि एंडोथर्मिक फेवर हो रहा है इसलिए वो, लेकिन वो यूजुअली 2 mark के क्वेश्चन में सफिशिएंट होगा, इसके अंदर खैर उससे कहा था use ली-शाटलर principle to explain your answers, so you have to write ली-शाटलर principle, which we missed. I said next one. This question is about calculate the amount of moles of N2 and H2 in the equilibrium mixture. ये वो table वाला है, ठीक है, you have to find initial moles, final moles, कितने react करें, कितने react नहीं करें, ठीक है, so you have this, you're going to make a table, ठीक है, initial, what are your initial moles? You're given 3 moles of hydrogen and you're given 1 mole of nitrogen, और इसके 0 moles है, ठीक है, तो initially nothing was added, NH3 wasn't added. Then the final equilibrium mixture, once equilibrium was reached, so they found out that this is 0.3 moles. तो मुझे explain, मुझे कोई बता दे, इसको जरा solve करो ना, what do you get for the other ones? What are the equilibrium moles for N2 and H2? .15 for N2 maybe. 0.154? N2 nitrogen. ये जो क्वेश्चन मार्क बना हुआ है इसकी बात कर रहे हो, ये 0.154 है. 15, yes. 0.15. नहीं, किसी और ने किया? अच्छा, इसका पहले वो करोगे, फाइंड आउट करो कि इसका यू हैव टू फिगर आउट, रिमेंबर कि ये जो गलती की है ना वो ये कि इनिशियल मोल्स और फाइनल मोल्स, ये जो इक्विलिब्रियम मोल्स हैं उनका कोई आपस में रेशियो नहीं होता, ठीक है, दे डोंट हैव एनी रेशियो बिटवीन देम. You have to figure out how much, what is the change that's happening. So you had 0 moles of NH3 and now you have 0.3 moles of NH3. What does that mean? It means that 0.3 moles were produced. Okay, there must have been a reaction where 0.3 moles
of extra NH3 got produced. Because shuru mein there was no NH3, but now you all of a sudden have 0.3 moles. So I'm going to explain, if 0.3 moles are getting produced, so how much N2 would react according to the ratio? It's going to be 2:1, right? The half of it? Okay, so 0.15 would react, right? Or H2 ke kitne react karenge, like 2:3. So to produce 2, you react 3 of H2. So if you want to produce 0.3, so how much H2 would react? 0.45. Okay, so that's going to be 0.45. So your final equivalent moles would be, okay, you initially added 1 mole, now 0.15 have reacted, so you're left with how much? You're left with 0.85 moles. And initially you had 3 moles, and out of that 0.45 moles have reacted. So kya bachta hai piche? That's 2.55. ठीक है, clear? Yes, sir. और इसमें याद रखना कि रेशियो जो है ना, वो सिर्फ इसके ऊपर, it only applies to this thing. It only applies to the change that's happening. इनके बीच में there would be no ratio. Initial moles, there would be no ratio between them. The ratio only applies to the amount that is getting produced or the amount that is getting or taking part in the reaction. ठीक है? अच्छा, तो इनके moles आ गए. So calculate the partial pressure of NH3 in the equilibrium mixture. Give you answer to 3 significant figures. So your for partial pressure you will use equilibrium. You'll use equilibrium moles. तो क्या formula partial pressure का? That's कैसे निकालते हैं? तो उसके लिए first thing क्या निकालनी पड़ेगी? We've already done a working. But these are my equilibrium moles. तो आप क्या निकालोगे कि आप अपने partial pressure निकालना है. तो NH3 के moles 0.3 है, so you'll find the mole fraction which is 0.3 out of the total. What is the total moles? It's 0.85 plus 2.55 plus 0.3. So you'll find the mole fraction. क्योंकि इंसानों का combined pressure जो है ना, that's 2 into 10⁻⁷. So इसका pressure क्या होगा? That's going to be 0.3 out of the whole thing, and multiplied by the total pressure, which is 2 times 10⁷. So what do you get? (1.62 into 10⁻⁶) Into 10⁻⁶ pascals. Okay. So just remember mole fraction into 2 into 10⁻⁷. Next part है कि उसने, there's another question they're asking for the Kp for the same reaction. What is the expression for Kp? Kp would be product, इसमें NH3 so it's the pressure due to the product divided by the pressure due to N2 into the pressure due to H2. H2 would be cubed because equation में 3 थे, और NH3 would be squared, right? So that's your expression. You just have to substitute the values in this, and if you do that, it's going to be 1.4 times 10⁴ squared. इसको calculator पे करना because it's a very hard calculation to do on your calculator correctly. So you get 2.2 into 10⁶. Don't assume that you know how to use a calculator because sometimes it kind of gets tricky to use the calculator. So H2 is 9.62 or into 10⁵. तो ये क्या वैल्यू है ये Kp की? किसने सॉल्व की है?
9.26 into 10 power minus 5. ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं कि is this the correct value or not. तो नहीं है ये, मैं वही कह रहा हूँ कि its KP is 1 times 10 power minus 16, not this value. तो ये देखो कि इसमें क्या गलती हुई, and did we make any mistake over here? Expression बिल्कुल वही है, that's 1.4 times 10 power 4 that's squared, divided by into, which is 2.2 times 10 power 6, and 9.62 into 10 power 5, and that's cubed. So everything, इसको दोबारा double check करो. Just remember कि इस तरह की calculation that's harder to do on your calculator. Make sure you use a lot of brackets. तो ये जरा दोबारा try करो क्या आ रहा है इसका. 1.0 into 10 raised to power minus 16. ठीक है. So 1.00 into 10 power minus 16. ठीक है, and keep your answers to significant figures. इसको अगर 1 लिखा ना, you'll lose marks for that. Because all the values were up to 3 significant figures, so your answer should be accurate up till 3 significant figures. They're asking for the unit as well. Unit easy, that's pascals squared, divided by pascals into pascals, and that's cubed. So it's going to be pascal to the power minus 2. So ये आपका KP की value आ गई and you're done. अच्छा, next one. अच्छा, तो एक चीज खास है paper 2 में ना, just make sure paper 2 paper 1 किसी भी paper में ना, just make sure कि assume करोगे मैं calculator use करने नहीं आता, ठीक है? You'll make a lot of mistakes on your calculator, so make sure do this as carefully as possible. I said the reaction is repeated with the same starting amount of nitrogen and hydrogen. The same temperature is used, but the container has a smaller volume. So everything is the same, except the container has a smaller volume. State the effects, if any, of this change on the yield of ammonia and on the value of Kp. So this is your reaction N2 plus 4 CH2. So मुझे बताओ कि if you use a smaller volume, what would happen? Pressure would increase. ठीक है, so उसने indirectly basically if you use a smaller volume, what you're doing is you're increasing pressure. ठीक है, so pressure and volume are inversely proportional. So अब pressure increase होगा तो किस side पे shift होगा ये? Forward. ठीक है, less gas mole side, and that's going to be forward, so it increases. There's going to be more ammonia that's going to be produced. What would happen to the value of Kp? No change. ठीक है, and why? When does Kp change, वैसे, by the way? Only sir with temperature changing. ठीक है, so only temperature changes Kp, otherwise it's not going to change. ठीक है, only temperature affects it. आगे equilibrium आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको. अच्छा, फिर ये उसका क्वेश्चन आ गया. It's across the period. ठीक है, this is like before this there's going to be sodium ही होगा. ठीक है, और उसके बाद जो होगा that's going to be Cl, and then there's going to be argon as well. As anyways, it's been explained why there's a general increase in the first ionization energy across the period. So why do ionization energies increase across the period? But 2 marks. The side factors. Why is it increasing across the period when you move across the period? Why is it More harder? proton number. Okay, so you have more nuclear charge, more protons. और क्या factors हैं? I mean that's More attraction between the electron and nucleus. हाँ, वो तो एक final point होगा, वो हम लिखेंगे, लेकिन पहले तो factors. एक तो more protons हो गया, which is why there is more attraction. What other factors leads to more attraction? Distance का क्या होता है across the period? Remember, across the period, distance gradually decreases. Atoms become smaller in size. So distance, it gradually decreases or slightly decreases.
You have the same number of shells, लेकिन वो attraction ज़्यादा होती है because sodium has 11 protons while Cl has 17 protons. So you have the same number of shells in Cl as well, but the attraction for the electrons is going to be a lot greater. अच्छा ठीक है, distance or shielding constant, ठीक है. So you also have constant shielding, or you have the same number of shells. But अगर हम complete answer लिख लें, this is the complete answer. And because of that, we always mention this line. Hence, because all of the above things that are going on, there's more attraction. ठीक है, ये statement end में लाजमी लिखनी है, more attraction between the electrons and the nucleus, ठीक है. तो इस वजह से there's going to be more attraction. और इसका वो देख लेते हैं कौन कौन से कितने मार्क्स हैं. So what is given is there's nuclear attraction का mark दिया हुआ है, same shielding का भी दिया हुआ है due to increasing nuclear charge, more proton numbers and similar shielding, ठीक है. तो उसने and दिया हुआ, तो ये must था, ठीक है. तो distance की बात ही की हुई, लेकिन that is also a factor. लेकिन वो उसका they didn't give a mark for that. अच्छा, why is there a dip? ये AL की dip, how do you explain that? उसकी क्या explanation होती है? कि why is AL having a lower ionization energy compared to Mg? और एक सल्फर का पूछा हुआ है. अच्छा, उसके अंदर remember this कि you have to mention a comment on the electronic configuration first. कि remember in AL electron is removed from a higher energy p orbital. But AL की जो outer shell की electronic configuration है, that's 3s2 3p1, while magnesium electronic configuration is just 3s2. So AL has a few more has one more subshell. So electron is removed from a higher energy as it's removed from a higher energy p subshell. P subshell. So which is also more shielded. So which is also more shielded compared to magnesium's s orbital. Hence, it's easier to remove electrons. ठीक है, वो इनमें एक बात रखते ना. तो hence जो कि यहाँ पे होगा कि वो p subshell और उसका s, एक तो ऑर्बिटल का मेंशन करना है और इधर उसमें बस हायर एनर्जी का लिखा हुआ है. That's about it. As a next one, P and S. Why is it easier to remove electrons from S? क्योंकि S का outer electronic configuration is 3p4, while phosphorus outer electronic configuration is 3p3. So वहाँ पे there is the first comment would be on the subshell. That electron in S is removed from a paired p orbital, while an electron from P is removed from a half-filled p orbital. So there is electron-electron repulsion or spin pair repulsion in sulfur, which makes it easier to remove electrons. ठीक है? अच्छा, अगले पे आ जाते हैं कि एक सेकंड. ठीक है, लेकिन remember आंसर किस तरह करना है. Make sure how you're going to phrase the answer. पहला comment होगा that would be on the orbitals, that it's a paired p orbital. Over here you are removing electron from an unpaired p orbital. और फिर second mark होगा कि it's easier to remove electrons because there's spin pair repulsion in this. ठीक है. अच्छा, ये वाला question you've got a this is obviously वो inorganic. ठीक है, तो वो खोल लेते हैं inorganic का. अच्छा, इसमें ये कि the chlorides of elements in the third period behave in different ways when added to water depending on the structure and bonding. L and M are each chloride of an element. Period C. Student investigated L and M, and the results are given. L is a white crystalline solid. ठीक है, chlorides हैं सारे. ठीक है, it's a white crystalline solid which has a melting point of 980. Group 3 में मुझे बताओ कि कौन से होते हैं white crystalline solids having high melting point. So what kind of chloride is it? Is it ionic or is it covalent? Ionic. ठीक है, that is ionic.
और remember this कि group जो आपका 17 ना उसमें there's only कहाँ पे inorganic अच्छा in group 17 there's only two that are ionic. There is NaCl and the other one is MgCl2. इन दोनों के अलावा there are no other ionic compounds. AlCl3 is covalent and उसके बाद जितने भी हैं ना they're all covalent. So it's either NaCl or MgCl2 and it forms an approximate neutral solution. तो इन दोनों के ऊपर it forms an approximate neutral solution. तो अगर मैं यहाँ पे इसको discuss करें so this is the hydrolysis. Or remember the focus is on NaCl and MgCl2. Now, NaCl forms an exactly neutral solution. The reason why it forms a neutral solution is because Na+1 has a very small positive charge, so it doesn't really attract water molecules that much. Jabki Mg ke upar na there's some hydrolysis. What happens is magnesium has a much greater positive charge density. So what happens is when MgCl2 dissolves in water, the Mg ions they attract water molecules with a bit more strength. And when they attract water molecules, what happens is that the positive H gets repelled, and so a bunch of H+ ions are produced. So your MgCl2 ends up very, very slightly hydrolyzing. It ends up reacting with the water and attracts the OH ions while repels the H+ ions. So some HCl is produced. So the pH is approximately neutral, but not neutral. So it's going to be MgCl2. Because NaCl ke case mein, the pH is going to be completely neutral. So यहाँ पे जो answer होगा ना, that's going to be MgCl2. And one other reason why it's going to be MgCl2 is कि जब उसने NaOH डाला ना, it's forming a white precipitate. So MgCl2 will do that because if you add NaOH, तो दोनों soluble हैं, OH ions and Mg ions, they would get together to form an insoluble precipitate of MgOH2. Na will not be able to do that क्योंकि Na के group 1 के सारे compounds होते हैं, they're all soluble. So the answer for the first one, L, is MgCl2, and you have to give an explanation for that. तो उसका वही बताओगे कि भाई वो white crystalline solid है, having a high melting point. तो पहले तो आप इस basis पे बताओगे, you have to explain that it is ionic, and then you're going to tell them that NaCl and MgCl2 are the ones that are ionic. फिर वो बताना कि it forms an approximately neutral solution. So there is some hydrolysis, so MgCl2 slightly hydrolyzes. Equation भी लिखने को कहा हुआ है, so you're going to write this equation over here. Okay, there's going to be some hydrolysis and some amount of HCl is going to be produced. So the pH is not going to be exactly neutral, but it would be very, very slightly neutral, or it would be around pH 6.5. और फिर बताना है कि भाई वो precipitate form करा है, तो उस पर बताना है कि भाई MgCl2 can do that. Like if you mix दो equations लिखनी होंगी, एक तो if you mix MgCl2 with NaOH, so there's going to be a displacement reaction. Mg ions in water and the OH ions in water would get together to form a solid precipitate, and solution में क्या रह जाएगा? NaCl. So everything points to Mg. अच्छा, M पे आ जाते हैं. It's a liquid with a boiling point of 331, so it's a liquid. That means it's covalent. So it's hydrolyzed rapidly by cold water to form a strongly acidic solution, white solid, and white fumes as well. So ये कौन सा होगा? कौन सा क्लोराइड है जो ये काम करता है? It's a covalent. It's a liquid. तो नीचे आ जाओ कोवलेंट के अंदर. अच्छा, इसमें दो ऑप्शन है आपके पास. You've got SiCl4, that is covalent and that's a colorless liquid. The other one is PCl3, that is also a colorless liquid. So आपके पास दो choices हैं. AlCl3 नहीं हो सकता, वो white solid है, ठीक है, it's not a liquid. फिर वो कह रहे हैं दोनों हाइड्रोलाइज कर रहे हैं. They rapidly you see fumes of HCl getting formed, rapid reaction हो रहा है, ठीक है. So वो सारी बात दोनों के लिए ठीक है. लेकिन एक के अंदर उसने कहा कि there's a precipitate that is forming. अगर if you read the question, तो he's saying that there's a white solid that is forming. तो उसके अंदर ना फिर SiCl4 would be the one, क्योंकि SiCl4 में there's a white solid that forms, which is silicon hydroxide. In PCl3 there is no white solid. There's H3PO3, which is a solution, not a solid. तो इसलिए आपका SiCl4 जो है ना वो confirm हो जाता है. So the answer to this one is SiCl4. वो आपने बताना है कि it's a covalent. Why is it covalent? Because it's a low boiling point liquid.
और फिर बताना है कि उसके बारे में बताना है कि कोल्ड वाटर के साथ उसकी इक्वेशन लिख लो, हाइड्रोलाइज कर रहा है, तो it reacts with water and ends up forming silicon hydroxide and gives off HCl. तो वो fumes है HCl के, and this is the white solid that is produced. तो ये इसका है, और उसके बाद ये उसने बस कंडीशंस और रीजंस मांगे में, तो उसमें बस आपने वो चार्ट देख के ना बताना है कि भाई क्या क्या कंडीशंस है. इफ आई जस्ट ओपन द चार्ट वेरी क्विकली, कि कहाँ पे, एक सेकंड, अच्छा तो इसके अंदर ना आपने बस वो चार्ट देखना है, रिएक्शन चार्ट, आपको सिंथेसिस वगैरह फ्लो चार्ट आपको याद होना चाहिए, एंड यू गोना मिस हो गया. अच्छा और बता देना पहला तो ये कि हैलोजन एल्केन टर्न्स इनटू OH अल्कोहल बन जाता है, दैट इज NaOH aqueous and you're going to reflux. Remember halogenoalkane है, beer की जगह ना OH आ गया. I mean you had a beer and now you have an OH. अच्छा इधर beer की जगह ना it turns into an alkene. That is elimination. That is also NaOH, but this time it's going to be ethanolic. और इसके अंदर ना हीट करना है और concentrated NaOH होगा. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ कि जो हमारा चार्ट है उसके अंदर if you have a halogenoalkane और आप NaOH aqueous डालोगे तो it will turn into an alcohol. That's it. Halogen will go and OH will substitute. Vice versa, if you have an halogenoalkane and you add KOH or a NaOH ethanolic and you heat it, then it will turn into an alkene. So that is what is happening, an elimination reaction and a substitution reaction. और तो ये वाला elimination है, ये वाला substitution है, और इसमें दो mechanisms होते हैं, SN1 and SN2. ठीक है, you got two mechanisms for this for substitution. वो बाद में डिस्कस करते हैं. अच्छा बियर की जगह CN भी आ सकता है, so that is NaCN ethanolic. So that is this part. कि अगर halogenoalkane है and you want to replace the halogen with a CN, so it's going to be NaCN ethanolic and reflux. You'll get a nitrile. So that's what's happening. और फिर nitrile से आगे dilute acid के साथ अगर heat करोगे ना तो it will turn into a carboxylic acid. So that is also happening over here as well. कि the CN then turns into carboxylic acid. तो यहाँ पे NaCN ethanolic होगा और NaCN ethanolic और reflux. यहाँ पे dilute acid plus reflux, you'll just add an acid, the CN will turn into carboxylic acid. फिर आपके पास alcohol है primary and that turns into an aldehyde and that turns into a carboxylic acid. So how do you do that? वो आपको K2Cr2O7 से काम चल जाएगा कि primary alcohol होगा. If you add K2Cr2O7, it turns into an aldehyde, और उसे further oxidize करोगे, it will turn into a carboxylic acid. लेकिन question में उसने यहाँ aldehyde पे ना रोकने को कहा. It's not, I mean, if you reflux it, the alcohol will turn into an aldehyde and the aldehyde will then turn into a carboxylic acid. The reaction will not stop at aldehydes. But in this question over here, he is stopping at an aldehyde first. So if you're stopping at the aldehyde, then you would have to distill it instead of reflux. To stop at aldehydes, you would have to distill. क्योंकि जैसे aldehyde produce होगा ना, उसको आप evaporate करके ना उसको निकाल लोगे बाहर, ताकि further reaction ना हो. So you would have to distill it, and that's it. तो दोनों के अंदर condition same होगी. K2Cr2O7, you can use K2Cr2O7 for the other one as well. यहाँ पे reflux करना है क्योंकि reaction को end तक पहुंचाना है, ठीक है. और यहाँ पे reflux की वजह ना distill कर लो ताकि aldehyde पे वो रुक जाए. तो those are going to be the differences in conditions. ठीक है, तो ये पूरा clear हो गया. ये oxidation है, ये oxidation है. This is substitution. This is elimination. This is substitution. And this is hydrolysis. तो वो type of reaction भी आपने select करना था. अगला part है ये वो SN2 mechanism भी पूछ रहा है. तो SN2 mechanism में क्या होता था कि when you have a primary halogenoalkane
the bromine bond is very polar, तो वो जो OH-1 का जो nucleophile है वो directly आके attack करता था और इधर के electrons repel होते थे. Everything has to be drawn in exactly the same way. ठीक है? I see a lot of papers जहाँ पे ये जो mechanism लिखे हुए ना exact ditto इसी तरह copy होने. If you have an SN2 mechanism, the OH-1 will directly attack that positive carbon atom and the electrons over there will get repelled. There's going to be a transition state. इधर उसने क्वेश्चन में he just asked for the first one. तो अपनी तरफ से बस ये ना जनरली बना देना कि अच्छा मैंने ये बना दिया तो मार्क्स मिल जाएंगे. It's not going to happen that way. ठीक है? They're going to cut marks for every missing step. एक भी miss हो गया ना partial positive, partial negative, arrow की direction, lone pairs नहीं draw किए, you're going to lose marks for that. I said that's this one. Either what he's talking about a tertiary halogen alkane now, which is 2-bromo 2-methyl propane. तो पहला पार्ट है कि स्ट्रक्चरल आइसोमर उसके 3 टाइप्स बता दो. कौन से 3 टाइप्स होते हैं और डेफिनेशन क्या है स्ट्रक्चरल आइसोमर की? Chain isomer, functional group and position. और कौन सा तीसरा कौन सा? Position, functional group और chain. चेन है. डेफिनेशन क्या है स्ट्रक्चरल आइसोमर की? मतलब मॉलिक्यूल्स हैविंग what is the definition for this? Same molecular formula and different structural formula. ठीक है. And what if they were asking and what is the definition of a stereoisomer? What is Same molecular formula, same structural formula, but different arrangement of atoms. yeah, different three-dimensional geometry of the molecule. ठीक है. Different arrangement of atoms नहीं क्योंकि वो बड़ा vague हो जाता है. ठीक है. उसकी जो shape है ना वो different है. ठीक है. They have the same molecular formula, same structural formula. Connections भी वही हैं. बस उसकी जो direction of the bonds है वो different है. ठीक है. तो वो same molecular formula, same structural formula, but different three-dimensional geometry of the molecule. ठीक है. अच्छा इधर वो कह रहा है कि इस क्वेश्चन में it's treated with the same reagents as in reaction 1. Identify the mechanism for this reaction. तो मतलब ये वो it's a tertiary propane है ना, that's 1 2 3. I mean this one is a propane, 2-methyl. So second पे there is a methyl and on the second there's a bromine as well, bromo भी है. अच्छा इस क्वेश्चन में what he's asking for is कि ये tertiary halogen alkane है, so इसका जो mechanism होगा that's going to be the carbocation mechanism, that's going to be SN1. इसके अंदर what will happen is the Cl will break away first and then the nucleophile OH-1 will come in. So it likes to form a carbocation. So question वो कह रहा है कि identify the mechanism, तो कर लिया वो SN1 है. ठीक है. What is the explanation? Why is this one? Okay. Why do tertiary halogenalkanes like to form carbocations? और यहाँ पे कार्बोकैटायन क्यों नहीं बनता? मतलब यहाँ पे पहले Cl टूट के अलग क्यों नहीं होता और OH बाद में क्यों नहीं आता? मतलब सब कुछ इकट्ठा क्यों हो रहा है? So what's the explanation for this? Why do you have this mechanism over here? क्या होगी explanation? और remember ये बड़ा important question है, बहुत दफा आ रहा होता है. But difference ये है कि जब carbocation होता है ना with 3 carbon chains, तो it has a very low charge density. मतलब इसके ऊपर जो positive charge होगा ना that would be very less. Why? Because it has a lot of electrons around it. तो वो जो positive charge है ना वो it gets neutralized to quite an extent by the electron donating alkyl chains. तो जब वो Cl टूट के अलग हो रहा होता है ना तो पीछे से उस Cl को वापस pull नहीं कर रहा होता because the positive charge is very small. That's the reason why the Cl-1 is able to break away. वहां पे issue ये है कि the carbon only has one electron donating carbon chain, so the positive charge is not that neutralized. इसका जो positive charge है ना that's bigger in size. So if it's bigger in size, the Cl will not be able to just take away its electrons because the electrons would be very strongly attracted to this positive carbon atom. So because of that, the OH-1 has to come in and it has to push or repel the Cl away. यहाँ पे forming the carbocation is very easy. तो 2 लाइनों का आंसर जो है ठीक है बिल्कुल सही है. बस 2 लाइनों का आंसर है, आपने बस ये बताना है
कि जब ये कार्बोकैटायन का क्वेश्चन आएगा ना, उसमें भी आएगा, मार्कोवनिकॉव्स रूल में भी आएगा क्वेश्चन कि वो वाला कार्बोकैटायन बन जाता है, ये वाला नहीं बनता। मैं दोनों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसमें भी आएगा उसमें भी आएगा। आंसर बहुत सिंपल है, आपने बस बताना है कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन, मतलब इसको मैं लिख भी देता हूँ वहां पे कि इसका जब कार्बोकैटायन बनेगा ना, द Br will take away electrons, ठीक है। So it's going to be a carbon in the middle which is going to be having a positive charge. So you're going to explain that 3 degree carbocations are more stable or they're easier to form. Achha, and what's the reason? As they have 3 electron donating alkyl chains. Yeah, as 3 electron donating alkyl chains are present. Or which decrease its charge density. मतलब इतनी ज़्यादा explanation देने की ज़रूरत नहीं है, बस वो अच्छा, which decrease charge density on carbocation, ठीक है। तो बस ये आपने बताना है। तो it's easy to form the carbocation, तो उसका देख लेते हैं कि उसमें किस तरह उसने explain किया है कि वही 3-4 लाइनें लिखी होंगी, that is going to be it। तो वही लिखा हुआ है कि it's SN1 का एक nucleophilic substitution, ठीक है। उसका बस लिखा हुआ है कि this forms a stable carbocation, that's 1 mark, we wrote that। or why? Because there are 3 alkyl chains, electron donating, ठीक है। electron donating or inductive effect is this, it's the same thing। or positive inductive, electron donating को ना positive inductive effect कहते हैं, but it's kind of the same thing। so or vice versa लिखा हुआ है, ठीक है। so you're going to get your marks। और क्या रहेगा इसमें? ये वो Markovnikov's rule का आ गया, butanene। butanene is, it's got a double bond, ठीक है, on the first one। HCl ने ऐड होना है, मुझे बताओ मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, माइनर कौन सा होगा? H किधर ऐड होगा, इस वाले के साथ या इस वाले के साथ? like if I make the whole molecule, पहले तो बताओ कि H कहाँ पे ऐड होगा? HCl, what would be the major First product? carbon. ठीक है, तो रूल है इसके H likes to bond with the carbon that's already bonded to more H atoms, ठीक है। तो HCl का जो H है वो इधर आके बॉन्ड करेगा। और इसकी भी अगर वो एक्सप्लेनेशन पूछेंगे ना, तो वो कार्बोकैटायन वाली कहानी है कि वो जब ये वाला कार्बोकैटायन बनता है ना, ये 2nd डिग्री कार्बोकैटायन है, ये ज्यादा स्टेबल है, इट्स इजी टू फॉर्म इट, ठीक है, क्योंकि इसके साथ 2 कार्बन चेन है। तो Cl-1 बड़े आराम से अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके पहुंच जाएगा उस तक, ठीक है। तो दैट्स योर मेजर प्रोडक्ट, द अदर वन इज योर माइनर प्रोडक्ट। तो स्टीरियोआइसोमर्स का हमने क्वेश्चन कर लिया था। स्टेट 2 रीजंस व्हाई butanene does not show stereoisomerism। सो क्योंकि वो जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन जो था ना, उसके साथ 2 H लगे हुए थे, दैट्स इट, ठीक है। वो butanene में एंड में जो कार्बन था ना, इट हैड सेम ग्रुप्स, दैट्स इट। और 2 रीजंस का है, तो एक तो वो ज्योमेट्रिक की होगी ये रीजन, नो सिस ट्रांस, और उसने स्टीरियो का है ना, स्टीरियो में दोनों आ जाता है। सो you have to explain the other one as well, which is optical। तो ऑप्टिकल क्यों नहीं होगा? क्योंकि कार्बन इज, देयर इज नो chiral carbon atom। और वो भी बताना है कि वो होता क्या है chiral carbon, which is bonded to 4 different groups। तो वो वाला भी एक्सप्लेन करना है। तो नेम X and Y, तो वो आसान है। ये एक तो Cl अटैच हो जाएगा सेकंड पे, सो that is 2 chlorobutane, और it's going to be 1 chlorobutane। मतलब वो डबल बॉन्ड बीच में नहीं होगा जब वो ऐड हो जाएगा, so there's not going to be any double bond here। So it's either going to be 2 chlorobutane or it's going to be 1 chlorobutane। और name the type of stereoisomerism shown by X। क्लोरीन अगर यहाँ पे ऐड होगा ना, तो this is going to be an optical isomer, it's a chiral carbon atom, ठीक है। ये क्लियर है? Sir, which one would be why, like the description is given does not show stereoisomerism? तो Y दूसरा वाला होगा ना कि Y में H इधर ऐड होगा और Cl इधर ऐड होगा, क्लियर है?
And sir, the major product would show stereoisomerism. हाँ ये वाला शो करेगा क्योंकि अगर सीएल यहाँ पे अटैच होगा ना इस वाले के साथ तो ये वाला कायरल होगा ना फिर मतलब मैं अटैच कर ही देता हूँ कि अगर आपका सीएल जो है ना वो यहाँ आके अटैच हो रहा है ठीक है तो ये वाला कार्बन कायरल है ना इसकी चारों साइड डिफरेंट है तो मिरर इमेजेस होंगे नॉन सुपर इम्पोजेबल इनहैंसोमर्स होंगे ठीक है क्लियर है Yes, sir. बस ये आखिरी क्या था कि उस तरह का रिप्रेजेंट ड्रॉ भी कर लो उसे ना तो वो आप ड्रॉ कर लो वो किस ड्रॉ करते हैं वो कार्बन के इर्द ना यू टेट्राहेड्रल ड्रॉ करो and you're going to write the groups that are around it. एक side पे there is CH3, फिर there is Cl on one side, top पे there is an H, और bottom पे there is another CH3, नहीं CH2 है और फिर CH3 है. तो that's it. तो ये आपका ना इसका mirror image बनाना है फिर ठीक है इसको exact इसका mirror करना है तो वो आखिरी होगा. तो that's it ये question complete हो गया. तो चलो ठीक है कल कोई और करते हैं ठीक है और किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है पूछ लो किसी के पास क्वेश्चन है वरना फिर हम अभी खत्म करें ठीक है चलिए ओके अल्लाह हाफिज Allah Hafiz, sir.